चैनल लाइक वी ट्रेड और ICT मेथड्स एंड आज का जो पूरा ट्रेड है हमने ICT मेथड के हिसाब से एक निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ है, राइट? सो आई एक्सप्लेन दिस एंड मोस्टली माय लैंग्वेज विल बी हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, ऑल विल बी द मिक्स लैंग्वेज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम आज के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। सी, this was my structure and I'll explain in the future chart as well as in the spot chart. Okay, so I have taken 2 3 trades and I have made around of rupees 20,000 plus profits. Okay, I have done scalping in this and आपको भी समझ में आएगा कि like निफ्टी में बैंक निफ्टी इंडेक्स जो रहता है इंडियन मार्केट्स में ICT टेक्निक्स वर्क काम करता है या नहीं। सो यू विल गेट टू नो अबाउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी। फर्स्ट निफ्टी जो भी रहता है मैं स्टार्टिंग में डेली मार्किंग के हिसाब से करके रखता हूँ। So like if I'm taking this on a daily high frame, what we get to see over here is like this is the volume gap. Okay, so this is the volume gap, this is the consequent encouragement. Okay, and even here it is a volume gap and I have taken this and this is my the consequent encouragement. Okay, so now coming on a 5 minute time frame, तो मैं 5 minute time frame पे आता हूँ। So a market, a huge gap up. It was a really huge gap up. Sorry, not sorry. It was a gap down. I'm extremely sorry. I was just looking here, so by mistake. So it was a gap down. The first candle, एक अच्छा खासा pin bar, a strong momentum along with the 2 strong candles. मार्केट ऊपर गया था। ओके, एंड लुक एट दिस कॉन्सिक्वेंट एनकरेजमेंट। यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया एंड दिस वाज अ big red candle and it actually overtaken all these rest 2 candles and this is your nothing but a clean order block. Okay, so this is the and this was the opening over here, so this was a very good point and I was looking here for the opportunities. Okay, either I would buy if it broke from here and either it will reverse, then I'll sell. Okay, so this was my good reversal point from over here. So what I have done, मैंने जो पहला ट्रेड था निफ्टी में लिया था, I'll just go on spot chart and I'll show you on 1 minute time frame. Okay, so यहाँ पे एक फर्स्ट ट्रेड था एंड मैं आपको एग्जीक्यूशन भी दिखा दूंगा उसका। ओके, सो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया 5 minute टाइम फ्रेम के चार्ट पे। सो वेट फॉर दिस चार्ट्स, मार्केट ने एक अच्छा खासा लाइक फॉर दिस फॉल दिया था। दिस वाज अ हाई एंड दिस वाज द लो एंड यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट है ये भी जो गैप वाला ही था। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ था। लाइक दिस इज अ वेरी गुड कैंडल, पिन बार कैंडल, वी कॉल्ड दिस एज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल एंड दिस वाज नॉट जस्ट वन द कॉन्फ्लुएंस, अलोंग विद दिस 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स हुआ था। सो दिस इज अ वेरी क्लियर कि लाइक यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है एंड वी शुड गो फॉर द बाइंग। एंड यहाँ पे क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा था, दिस इज माय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड आई वाज वेटिंग फॉर द इनएफिशिएंसी। सो यहाँ पे 2 एफपीजी थे, दिस वाज माय फर्स्ट एफपीजी एंड सेकंड एफपीजी। दोनों में से कहीं पे भी आने आता है तो मैं ट्रेड के लिए रेडी रहता हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड कि यहाँ तक आने के लिए हमें वेट करना है। So market went once again, it broke the break of structure, like this is a strong momentum you can say, एंड यहाँ पे एक हाई बनाया था, राइट? सो दिस हाई वाज अ वेरी गुड लाइक वी कैन से यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल आया था एंड अगेन इट हैज टेकन दिस हाई एंड इट क्रिएटेड अ लिक्विडिटी ओवर हियर। सो मार्केट ने फाइनली हमारे फर्स्ट एफपीजी पे आया था एंड दिस इज अ अराउंड 1044 1045 जैसे ये पॉजिटिव मोमेंटम आया था मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। आई शो यू द एग्जीक्यूशन एज वेल एज एंड दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड टारगेट एज आई सेड ऑन द डे ओपनिंग यहाँ पे था, राइट, ऑन द फ्यूचर चार्ट के हिसाब से। सो दिस वाज माय सेकंड टारगेट बट मैंने यहाँ पे जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एंड आई एज आई सेड कि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था तो इट वाज लाइक वेरी टाइम डे के हो रहा था, तो आई जस्ट वेटेड टिल हियर और मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। सो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन था, दिस इज 1045 कैंडल एंड दिस इज 1133 कैंडल एंड दिस वाज अराउंड 23800 C. So I'll show you the chart of 23800 C where my execution was done. Okay, so this is 23800 C and as you can see over here ये जो है 1045 का कैंडल है, राइट? तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 लॉट किए थे। इफ़ यू वांट आई जस्ट शो यू द एग्जीक्यूशन। आई एम दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, मुझे एडिटिंग में कुछ भी आता नहीं है तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था बट मैंने मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था। आई जस्ट शो यू ओवर हियर। ओके, सो yes, you can just look at this video as well.
for the live execution. Okay, so I'll just go on my chart and I'll explain you again. I don't know why this is taking so much of time. Okay, it should have been played. Really sorry. Even my PC is getting laggy over here. I really don't know what's wrong with this. Okay. Okay. Anyways, so 10:45, 10:45 it went from started from here, and but obvious मेरा जो stop loss था यहाँ पे इसके नीचे था. This is around 216, but I will keep it as 215, and I have bought some quantity over here. Let me see if this is working. No. So it went up and I waited over here, and after this candle it was a very big momentum, and I thought to buy some more. But when I bought like a more two lots over here, and it gave a pullback, and again it gave a very good pullback, and this was like कि यहाँ पे अब ट्रेड का मोमेंटम लूज हो रहा था. बट एज वी हमारा जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहता है, सो उसके हिसाब से I was just waiting till here, and इसके बाद में exit करने वाला था. But and after that time it went up and it has given, and I executed over here, that is 11:33 candle. So मैंने पूरा का पूरा मेरा जो target था according to the spot chart वो पूरा complete हो गया. And I will show you the execution as well as on the spot chart as well as. Okay, so नहीं ये वीडियो तो प्ले नहीं हो रहा है, so I'm really very sorry, I can't show you the that. Okay, anyways, so where I was. Okay, even my PC is getting lag, my laptop is getting lag, I don't know. And okay, so from here this was a 10:45:46 candle, right? And I bought over here, and it came actually here. We can see a volume imbalance, and on this volume imbalance it was the right time to buy for you. And the target was this first target, and the second target I have already shared. And that big pullback, as I said, it came again and it has respected, as you can see over here, that has been respected once again to the volume imbalance, and again a strong momentum, and it has completely on 11:33 candle I exited all my position over here. So I have made around 11,000 over here, and this was my first trade. And then later on I just waited for my second trade. I actually wanted to wait and hold till here, but option buying is really very scary. Sometimes it may आपका पूरा का पूरा मतलब लाइक जो प्रॉफिट है 2 मिनट में भी ये निकल जाता है. सो आई जस्ट एग्जिटेड ओवर हियर, and now coming on a 5 minute time frame. So for the second time I waited for the second half, and as we can see यहाँ पे एक buy side था. Like फ्यूचर के चार्ट्स में आपको दिख जाएगा. Buy side liquidity is nothing but your day opening. यहाँ पे reversal आया था, and this is a very clear indication, and this is a first break of structure, and this is your second break of structure over here. So I was waiting for my inefficiency wherever I'll get the entry, and this was the inefficiency. So on a 1 minute time frame I'll show you my execution as well as over here. Wait just a second. Yeah, this is getting very slow, sorry for this. Okay. So right over here you can see this was your first break of structure, and the whole it went again, and you got the second break of structure. This is a change, you can say like a reversal. Okay, so now here I waited here. This is my consequent encouragement of that gap, and here this is a 5 minute FVG. Okay, this is a 5 minute FVG. So my first FVG over here for the selling, and the second FVG is over here. So what I have done, I just waited over here, and for this second FVG, and it gave a rejection, so I still waited over there. This was not my confirmation, and again over here you can see there is a three candle pattern, which you can see this is a OB, which becomes okay. And from this OB just below this, this was my entry over here, and this was my stop loss. This strong line, as I have indicated, this was my stop loss, and this is around 23,848 pence at 23,850 PE. I'll show you the execution as well as 23,850 PE. Let's check this out.
23,850 P. Okay, so 23,850 PE. So यहाँ पे I just bought something around 200 के level पे, and then I sold here some, and then I sold here, and again I have bought, and again I have sold. So you can see the timing over here. This is 131, this is 123, and where I have bought around 1. Okay, so 23,850 PE, and I'll show you again. Okay, so according to my trade entries, okay, दिस ईयर ओके। ये जो 12:57 का कैंडल था, इसके बाद मैं वेट किया, और यहाँ पे 1 बजे और 1:03 1:05 बजे जो मेरा सेकंड एंट्री था, यहाँ से लाइक मैंने ऐड करते करते गया, एंड आई एग्जिटेड अराउंड 131 एज आई हैव सेड। व्हाई? बिकॉज देर इज दिस इज द previous day low, and this is the SSL, sorry, today's low, and this was my SSL. So I just waited over here, and I exited all my position, and I made almost again 11,000 rupees over here, and this was a really very good trade. And once again, when I got a third trade over here, this was around 2:13 p.m. This is a clean FPG, just because um, one liquidity, what we say here is a one liquidity. See, you can see a lot of FPG. Okay, whenever you trade on a 1 minute time frame, you have to point every FPG, every inefficiency, and this is Indian market, so you will get a lot of inefficiency over here. तो आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। सो ये FPG पे मैंने यहाँ पे एक बाई साइड था, एंड दिस इज बट ऑब्वियस बाई साइड एज वेल एज चेंज इन ट्रेंड। ओके, तो ये पूरा ये ओबी बन गया तुम्हारा order block, and OB plus FPG, a very strong confidence. So here I just bought P, मैंने यहाँ पे लिया था 23,800 P लिया था, this is 7,878. I'll show you the execution as well as, and from here I just exited over here. Okay, और यहाँ पे मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, and then I exited and I almost made something around 7 to 8,000 over here. तो मैं क्वांटिटी लेस करके मैंने यहाँ तक कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। वन मोर ट्रेड आई फाउंड इट वेरी यूजफुल ओवर हियर, इज जस्ट बिकॉज ये जो कॉन्सिक्वेंट एनकोरेजमेंट था यहाँ पे, राइट? सो यहाँ से सेल हुआ था, दिस वाज माय टारगेट, बट यहाँ पे टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो आई थिंक एंड आई थॉट कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रिवर्सल मूवमेंट मिलेगा, एंड दिस वाज अ ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेक हुआ, एंड इट एक्टेड एज अ ब्रेकर। यहाँ पे मैंने एक 6,000 का लॉस भी लिया था, इट्स जस्ट बिकॉज मैंने फर्स्ट बाय किया था,